So good evening, all of you. Again, welcome to Meridian Overseas. So I am Pratibha, country manager for Australia and New Zealand. In last webinar, we have discussed about New Zealand, what are the opportunities, how we can file the application and all the things. Today, I am going to discuss a very important aspect of Australian application, that is GTE. So GTE means genuine temporary entrant that each and every student need to satisfy when a student wants to apply for Australia studies application. So if you are going on subclass visa 500, that is international student visa application, you need to satisfy certain requirements of university. So to getting the offer letter from the university, definitely we will be giving the educational documents, work experience documents. If we have any gap, so student will be submitting gap justification documents. Apart from these all, Australian universities wants to know, or High Commission wants to know about your financial status. Though you are going as an international student, so your main focus to get into Australia for the studies. So to confirm that particular point, universities or High Commission is also looking for your sound financial status, and it comes under GTE requirement. So how it goes? Suppose you have received an offer letter from any of the university. So any offer that you receive from Australian university, maximum time it would be conditional offer letter, and condition would be only the GT condition if you have submitted all your relevant documents, your English requirement, each and everything. So only one requirement is pending, that is GT. So today we will be going to discuss that how to satisfy your GTE requirement. So for that, let me share my screen first. So we'll start. So when you receive an offer letter from the university, so you need to give justification of your financial status to the university. So it includes, first of all, any document apart from your academics, apart from your IELTS, if you have any deficiency, so that university will ask into the conditional offer letter. Next, financial matrix. So this is an Excel that you need to make. It shows that how many accounts are there, how many funds into that particular account, what is the status of the account. So each and everything is mentioned in this financial matrix. In this financial matrix, definitely you have to show funds. So we are looking for evidence of funds for first year, tuition fees, living expenses, and return airfare. So these three things we are looking at. So basically how it goes, suppose you are going for master's program that is of 2 years, or you are going for bachelor's program of 3 years or honors program of 4 years. But at the time of admission, at the time of GTE submission, you need to show 1 year tuition fees, 1 year living expenses, and your return airfare. Here, I have not mentioned health insurance, but yes, health insurance is also mandatory when we are doing our financial matrix. So we will be keeping health insurance also. So there are four things that we need to keep. We need to show the funds to cover 1 year tuition fees, 1 year living expenses, health insurance for the entire duration of your study in Australia, whether it is 2 years or 4 years, and return airfare. So these four heads we will be looking at. So to evidence of funds, where you can show education loan, you can show savings account,
or you can show FDs of the sponsors. Even you can show provident fund also. So if any student has their parents into government job, or they have their PF account, PPF account, so you can consider that also. So in case of education loan, we are looking for education loan sanction letter along with valuation report of the property. So definitely if you are taking loan of higher amount, so your banks are looking for the collateral. So whatever collateral that you have kept with bank, so we are looking for the evaluation report of that particular property. And sanction letter should be on the name of the university in which you want to apply with the program details. Savings account. So we are looking for savings account, maximum 4 to 6 months with bank balance certificate. So bank balance certificate stated that whatever amount you have at the current date. And when you are filing for GT, make sure that you have updated statements. University are not considering statements that are 15 days backdated or 18-20 days backdated. So whenever you are filing for GT, your documents, your savings account, your FD account should be updated. Now, FDs. So FDs you can consider. FDs would be minimum 6 months old that you need to give it to the university. So in case of FDs, we are looking for FD certificate along with current balance certificate. If your FD got matured, so either you have to renew it or you need to credit that amount into the savings to utilize it. Next point is ITR. So yes, we are looking for ITR of the sponsors last 2 years of assessment years. So along with the computation. So one current year and one previous year ITR is mandatory to give. Now, the total value of your ITR comes around 10 to 12 lakhs of your income. Then identity proof of sponsors and relationship proof to establish relation between the student and the sponsors. आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर्स में कैसे होगा? सब स्टूडेंट जो भी आपके स्पॉन्सर है, सपोज आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर्स हैं या आपके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर हैं या आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स स्पॉन्सर्स हैं, सो उस केस में आइडेंटिटी प्रूफ में वी आर लुकिंग फॉर पैन कार्ड, आधार कार्ड, or you can give your these are for the IDs. And if your family, if sponsor is associated with any kind of job, so we are looking for job IDs. And if your parent belongs to business grounds, so business mein we are looking for GST registration of the business. So no matter how many sponsors that you are adding, so we will be recommending minimum 2 or maximum 3 sponsors can sponsor a student's education. Okay. Now coming to the students and sponsors relationship proof. So in that case, definitely if your parents are sponsoring you, so your parents' name always comes into your document. So that would be verified. Suppose your grandparents, if you are sponsoring you, so in that case, definitely your grandparents' name is on your parents' documents. And at that point of time, definitely we are looking for affidavits of sponsorship from all the sponsors, so that we can also give as a relationship proof. Another important thing that is contact details. So as I have told you in point number 2, financial matrix. So in financial matrix, we have to mention landline number, email ID of the branch manager who working in a bank to verify the balances. So if a student is for education loans, savings account, FDs,
So in that case, we are looking for contact details of the bankers, landline number and email ID. Email ID, we are not accepting any email ID of Gmail, Yahoo, Hotmail, Reddit. So we are looking for the official email ID of the bank or any of the financial institution. No. Here I'll clarify more. Calculation of funds. So आपका जो financial matrix है, उसमें we are giving estimation of the funds. So estimation में कैसे होगा कि we are looking for 1 year tuition fees जो मैंने आपको बताया. So this is the 1 year tuition fees. Then living expenses. Living expenses now it has been updated to 24,505 AUD. Travel expenses approximately 2,000 AUD. And your health insurance approximately 15,000 AUD. So if you're calculating all these four heads, so it comes around university fees. Definitely it varies from university to university and program to program. So the total amount comes around 25 to 28 or 20 or 30 lakhs depending upon the university and depending upon the programs. So how you will be calculating? Suppose the total AUD is 48,000 or 49,000, whatever it is. So you need to multiply it by 52, 53 or 54, the rate of the AUD as on date. And then you can go for that amount in INR. So when we are making our financial matrix, so we will be doing calculation in both the currencies, AUD and INR. No. For example, if your total comes to 25 or 26 lakhs, so we recommend that you must be show a balance of around 27.5 or 28 lakhs. Why it is so? Because we are not showing amount net to net. So whatever amount that a total will become, so you have to show at least a lakh rupees more on that. अगर 25 लाख दिख रहा है तो आप 26.5 लाख अपने शो कर सकते हैं. अगर आपको 27 लाख आपके कैलकुलेशन में आ रहा है तो आपको 28 लाख शो करना होगा. So that is the show amount that you need to show to the university at the time of clearance of GTE compliance. Next, financial documents. So university will ask for number of documents. So अगर आपका interview होगा तो university will schedule your interview accordingly. देन आपका जीटी असेसमेंट, जब आप सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देंगे जो भी हमने एनेक्शन ए में डिस्कस करे, तो उसके बेसिस पे आपका जीटी फाइनेंशियल्स होगा. उसके बाद अगर आपके आईएलटीएस स्कोर्स या पीटी स्कोर सबमिट नहीं है तो यू नीड टू सबमिट दैट स्कोर्स. और अगर प्रोविजनल डिग्रीज भी आपकी नहीं है यूनिवर्सिटी के पास तो यू विल बी सबमिटिंग दी ओरिजिनल डिग्रीज. सो वट एवर पेंडेंसी इन टू योर एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू क्लैरिफाई. SOP, yes. So SOP is the most important aspect and the component of your application. So in SOP, you have to give a clear justification about yourself, your vision to study in Australia, your vision to study that particular program and from that particular university, and also your future prospects. So these things you have to clearly mention into your GT SOP. If you have any gaps, so yes, you have to satisfy those gaps as well. Evidence of fund में we have discussed that first we can go for educational loan. So educational loan आप किसी भी financial institution से ले सकते हैं that has been approved by Australian High Commission. So there are list of banks. So इसमें
Australia doesn't accept any educational loan from any Grameen bank, Sahakari bank, any financial institutes. So before taking the loan, so you can go to the you can find approved financial institution list by Australian High Commission on Internet, and then you can go for the education loan. एजुकेशन लोन आपका फुली सैंक्शन होना चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंडीशनल लोन होगा देन यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट इट. ठीक है. एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, यू हैव टू शेयर द evaluation report of the collateral property. अगर आपकी कोलैटरल प्रॉपर्टी पेरेंटल प्रॉपर्टी है या उसके एक से ज्यादा ओनर है, सो इन दैट केस आपको रजिस्टर्ड कॉपीज भी दिखानी होगी आपकी प्रॉपर्टी की, और उसमें आपका कितना पोर्शन है या जो भी आपके पेरेंट्स उनका कितना पोर्शन है वो भी आपको क्लियरली जस्टिफाई करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपने एफडी के अगेंस्ट लोन लिया है, सो दैट आल्सो यू नीड टू सबमिट द कॉपीज ऑफ एफडी टू द यूनिवर्सिटी. बट ये एफडी के लिए बोला जाता है कि अगर आपकी एफडी 3 से ज्यादा महीने पुरानी है तो आप उसको उसको कंसिडर नहीं करो. तो एफडी आपकी कम से कम 6 महीने पुरानी होनी ही चाहिए. देन कमिंग टू द डिसबर्समेंट ऑफ लोन. सो आपका जो लोन डिसबर्स्ड होगा वो स्टूडेंट के अकाउंट में मैंडेटरी होना चाहिए. अब इसमें एजुकेशन लोन पे डिपेंड करता है कि आपका ये एजुकेशन लोन ट्यूशन फीस के लिए है या ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस दोनों के. अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका लोन सैंक्शन होता है, सो इट इज मैंडेटरी कि आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है यूनिवर्सिटी फीस की, इट शुड बी फ्रॉम द एजुकेशन. ठीक है. सो एजुकेशन लोन से ही आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की जाएगी. दूसरा आता है सेविंग्स अकाउंट दैट यू कैन कंसिडर. सो सेविंग्स अकाउंट में वी आर लुकिंग फॉर बैंक स्टेटमेंट. उसमें आपका 3 से 6 महीने पुराना पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए अलोंग विथ द बैलेंस रीसेंट बैलेंस सर्टिफिकेट. ये आपको सबमिट करना होगा. अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं एंड दे आर यूजिंग बिजनेस फंड्स, सो डेफिनेटली अगर बिजनेस है तो बिजनेस आपका करंट अकाउंट से आप ऑपरेट करते हैं. सो अगर आप करंट अकाउंट का अमाउंट यूज करना चाहते हैं अपने से बच्चे की स्टडीज के लिए या आपके पेरेंट्स को यूज करना चाहते हैं, सो इन दैट केस they can transfer their current accounts amount into the savings, provided we will be needing a certificate from the business stating no objection certificate. मीन्स अगर आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस है और आप वहां से बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं फॉर योर हायर एजुकेशन, सो आपको बिजनेस के लेटर हेड पे ये मेंशन करके देना पड़ेगा कि वी विल बी यूजिंग दिस अमाउंट फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ व्हाट. अगर तो वो सिंगल सोल, अगर आपका बिजनेस जो सोल बिजनेस है तो इस तरीके से होगा. अदरवाइज अगर आपके फादर है और आपके फादर के 2-3 पार्टनर्स हैं जिनकी बेसिक जिनके जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं और आप उस बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं, तो आपके फादर के अलावा जितने भी उनके पार्टनर्स होंगे 1, 2 या 3, सबके नाम से एक एनओसी बनेगी जिसपे हर एक प्रोपराइटर के शेयर साइंस होंगे, और फिर आपको वो एनओसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी होगी. फिक्स डिपॉजिट नॉट फ्रेशर देन 6 months, और अगर ऑटो रिन्यू होती है तो वो भी आपको मेंशन करके बताना पड़ेगा. नो. हु कैन स्पॉन्सर्स. तो सेविंग्स अकाउंट में कौन कौन आ सकता है? सेविंग्स अकाउंट वी कैन कंसिडर फॉर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स,
मैटरनल पैटर्नल अंकल आंट, इनके आप सेविंग्स अकाउंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एफडी किस किस एक्सेप्ट करेंगे आप? सो एफडी एक्सेप्ट होती है पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, अंकल आंट्स की, अलॉन्ग विद दी कॉपी। कोलैटरल लोन अगर आपका है तो कोलैटरल लोन कौन ले सकता है? एजुकेशन लोन डेफिनेटली पेरेंट्स ले सकते हैं, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, uncle aunt, case by case depending upon the financial status of the student and financial status of uncle aunt. पीएफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दो लोगों का एक्सेप्ट होता है। सोर्स ऑफ रिसेंट फंड, सिंस अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो फंड्स होते हैं वो 3 महीने या 6 महीने पुराने होने चाहिए, बट अगर हमारे पास 3 महीने या 6 महीने पुराने फंड्स नहीं, सो उस केस में हम क्या करेंगे? सो उस केस में एक ऑप्शन तो पहले हमने डिस्कस किया कि हम करंट अकाउंट से अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डिसबर्स करेंगे एंड देन वी कैन यूज इट आउट। उसके अलावा वी कैन लिक्विडेट शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स एंड वी कैन लिक्विडेट दैट अमाउंट इनटू द सेविंग्स एंड वी कैन यूज इट आउट। अगर आपके कोई कोऑपरेटिव बैंक या ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो पैसा भी आप अपने सेविंग्स पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपनी एफडीज को ब्रेक करवा के सेविंग्स में डाल सकते हैं टू मेक द फंड लिक्विड। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, सो प्रॉपर्टी सेल डीड के साथ अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, आप जो सेलिंग अमाउंट है उसको भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफर योर पीएफ अकाउंट, आप पीएफ अकाउंट से भी अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट से भी कर सकते हैं, एलआईसी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, शेयर्स, इक्विटीज, एसआईपीज, पोस्ट ऑफिस में आपके पास पैसा है, इन सबको आप अपने सेविंग्स अकाउंट में लिक्विडेट करके यूज कर सकते हैं। सम फंड्स दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, दैट इज सेल ऑफ गोल्ड। अगर आप कोई गोल्ड लोन लेते हैं या गोल्ड सेल करते हैं तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज अ फंड। आप कहीं से बोरो नहीं कर सकते हैं पैसा, या गिफ्ट मनी या बोरो मनी इज नॉट एप्लीकेबल, सो वो भी नहीं चलता। अब ये हमारे जितने भी फाइनेंशियल हैं इसको सपोर्ट करने के लिए हमें आईटीआर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आईटीआर हमें लास्ट 2 इयर्स का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है along with the computation, so computation is also required। तो जैसे कि मैंने इनिशियली बताया कि आपकी कम से कम 10 to 12 lakhs की आईटीआर होनी चाहिए, चाहे वो 2 स्पॉन्सर मिला के हो चाहे वो 3 स्पॉन्सर्स मिला के हो। सैलरीज, अब हम टाइप्स ऑफ फंड, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेबल इनकम कौन कौन सी ले सकते हैं? तो सैलरी, सैलरी हम सबकी ले सकते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, सबकी। तो उनके लिए हमको जस्टिफाई कर, सैलरी जस्टिफाई करने के लिए वी आर लुकिंग फॉर 2 years ऑफ आईटीआर। Business, yes, income from business definitely acceptable along with GST registration. So business registration certificate is mandatorily required. अगर पेंशन है, so पेंशन में we can take pension of parents, siblings or grandparents. In that case, you have to show the pension account along with the statements. एग्रीकल्चर इनकम है, सो देखो एग्रीकल्चर इनकम इज वेरी डाइसी, सो पेरेंट्स की अप टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेबल है, बाकी सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट की दैट इज केस टू केस बेसिस। सो टू सपोर्ट योर एग्रीकल्चर इनकम 2 साल की आईटीआर अलॉन्ग विथ जे फॉर्म। जे फॉर्म अब हैंड रिटन बंद हो गया है, सो जे फॉर्म जो कंप्यूटराइज निकलता है वही जे फॉर्म एक्सेप्टेबल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्रीकल्चर लैंड, जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ओनरशिप पेपर्स, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए टू मेक योर एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ इनकम।
So as I have discussed earlier, identity proofs of sponsors and relationship. So स्टूडेंट को सबमिट करना होगा पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी। और यूनिवर्सिटी अगर आपको कोई सर्टिफिकेट देने के लिए बोलती है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, सो जितने भी आपके स्पॉन्सर होते हैं, एक दो तीन, अलोंग विथ स्टूडेंट डिक्लेरेशन। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक एफिडेविट 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बनाना होता है, एंड इट शुड बी सील्ड एंड साइंड एंड नोटरी अटेस्ट। सो ये नोटरी अटेस्टेड भी होगा। स्पॉन्सर्स में यू कैन टेक पेरेंट्स एज अ मेन स्पॉन्सर, ग्रैंड पेरेंट्स बोथ पैटर्नल मैटरनल, सिबलिंग्स यू कैन टेक अंकल और आंट, फर्स्ट अंकल और फर्स्ट आंट। फर्स्ट अंकल मीन्स आपके चाचा हो सकते हैं, आपके बड़े पापा या ताऊ जी हो सकते हैं, आपकी बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है, या मामा हो सकते हैं। सो फर्स्ट रिलेटिव आपके हो सकते हैं इसमें, एंड दे कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल इनकम। Your spouse, if you are married and you are applying for student visa, so in that case spouse can fully sponsor. In-laws, father-in-law, mother-in-law can also sponsor. और स्टूडेंट अपने खुद के आईटीआर भी शो कर सकता है, बट दैट आईटीआर वी विल बी एक्सेप्टिंग फॉर द गैप जस्टिफिकेशन। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम cousins, family relatives, friends, distant relatives. Sorry. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज पीएफ अकाउंट। अगर आपको पीएफ का पैसा यूज करना है तो दैट यू नीड टू लिक्विडेट इनटू दी सेविंग्स। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग पोस्ट ऑफिस फंड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, टर्म डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिपॉजिट विद कंपनीज, चिट फंड, एलआईसी। जो भी अमाउंट है वो सब कुछ आपको सेविंग्स में लिक्विडेट कराना होगा, एंड वी विल बी कंसिडरिंग ओनली सेविंग्स अकाउंट, FDs and education. So in a nutshell, we can say कि we will be accepting, Australian university will be accepting only three forms of funds: savings, FDs and education loan. So that's the end of my PPT. Now I am open for the questions. So if you have any questions, so please ask. Any questions? Let me check. Rekha, you have asked if you don't have ITR. So, Rekha, ITR is the mandate requirement to satisfy your GT condition. So, if you don't have ITR as of now, so you need to visit any of the CA around you, take suggestion from them, and fill the ITR as soon as possible.
Next, Advait. So Advait, since your father ITR is below 5 lakhs, so what you can do, either you can, on the basis of the income, either you can correct your ITRs, or you can add either your mother into that, your siblings, your grandparents, your uncle, aunt. So all the sponsors that we have discussed in the PPT, you can add all of them. And as I told you that at the time of GT, you can give minimum 2 or 3 sponsors. So combining 3 sponsors or 2 sponsors, you can make your annual ITR by 10 to 12 lakhs. जयंत, अगर आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है एंड यू वांट टू पुट इट ऑन कोलैटरल, सो कोलैटरल करते समय भी वी आर लुकिंग फॉर द एनओसी फ्रॉम ऑल द जॉइंट होल्डर्स जो भी आपकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड है. अगर आप सेल करते हैं तो सेल करते समय अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल होती है जो भी आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, सो उस केस में आपका जितना भी शेयर रहता है वो शेयर आप यूटिलाइज कर सकते हो टुवर्ड्स योर एडुकेशन. If you are not meeting IELTS requirement, so first option that you can retake your test. If not, then you can go via ELICOS program. So there are certain universities offering ELICOS program. So you can go via ELICOS program also if you are not meeting the English requirements. We are looking for ITR of 2 assessment years, 1 year current and previous year. So 2 years ITR is mandatory. Yes, you can distribute your show money among your 2 or 3 sponsors. For example, आपके your figure comes around 25 to 28 lakhs. So in that case, suppose your mother have 5 lakhs, your father has 10 lakhs, your grandfather has 10 lakhs, you have 3 lakhs. So you can include all of them and then you can show into your funds. As per reports, previously the visa processing time starts from 4 days and it goes up to maximum 45 days. But now Australian High Commission has expedited the visa application process. So you will be getting your visa outcome within 4 to 16 days maximum. Whether it is a group of 8 university or level 1 or level 2 university. अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स पेंशनियर हैं, सो यस दे कैन स्पॉन्सर. और पेंशन जो लोग पेंशन लेते हैं उनका भी आईटीआर बनता है. सो वॉट एवर पेंशन दैट दे आर ड्रॉइंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आईटीआर फिल कर सकते हैं और जो भी आपका पेंशन अमाउंट है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. वी आर लुकिंग फॉर द पेंशन डॉक्यूमेंट्स along with the pension statement. If you are filling 2 years ITR on the same day,
So it is not acceptable. So if you have not filled previous year ITR, so you can fill it by using backdated, and then you can fill previous year. So there should be a reasonable gap between both the ITRs. Any questions? Anything else that you want to ask, that you want to check with me? So students, if you are aiming for February, March intake, so kindly do the process as soon as possible with all your academics, financials and financials documents along with your English requirement documents, because now most of the universities has closed their applications for February intake. But another good news that other intakes are open with Australian universities. So either you can apply for June, July, November, all intakes are open for the universities. So if you are aiming for Australia study visa, start your application, or you can connect with me for any clarification, for any kind of help for your application process. So since Meridian is having 10 branches pan India and we are having head office at Rajasthan, Jaipur, so you can either visit head office or you can visit any of our branch for getting counseling and for getting your application assistance. So thank you for your time and all the best for